Financial Management, and this is module number 179. In this course, we have several topics, and the topic of discussion in this module is capital budgeting. And in the last module, we were having a focused discussion on what is called internal rate of return. So this is the second part of our discussion on internal rate of return. In the last module, we discussed that what theoretically IRR is and what kind of discounted cash flow method IRR is. And in this module, we will see that how the value of IRR, the percentage of IRR is calculated. If we have a look at the screen, we would see that in this spreadsheet, we have got a cash flow. This cash flow is initially an outflow of 100,000 and then the inflows for 5 years from 20, 30, 40, 50 and 60,000. This is the same cash flow that we have used in the previous modules, and for the purpose of simplicity, we are continuing with the same data. Now, as we talked about the process of calculating IRR, and we said that the method or the process of calculating IRR is what is called a hit and trial method. A hit and trial method is that you assume a certain rate of return, apply that and see whether you get IRR or not. And if you do not get, you move to another rate of return and then to another rate of return. The first question that comes to our mind, that if we have applied a rate of return, any rate of return, and we do not get the exact answer, what should we do? Should we increase the rate of return or we decrease the rate of return? यानी अगर हमने, जैसा कि हमें स्लाइड में नज़र आता है कि 10% रेट ऑफ रिटर्न पर अगर इस कैश इनफ्लो को डिस्काउंट करें तो हमारे पास जो नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है या टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ रही है, हम कह सकते हैं वो 144,000 है. हमने कहा कि इसको बराबर होना चाहिए कैश आउटफ्लो के, यानी अगर कैश आउटफ्लो 100,000 है तो इसको भी 100,000 ही होना चाहिए, whereas this is actually 144,000. यानी जो रेट ऑफ डिस्काउंटिंग हमने अप्लाई किया है उस डिस्काउंटिंग रेट के अंदर हमारे पास वैल्यू हमारे रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा आ रही है. So what we need to do? We need to basically increase the rate of return so that we can reduce the present value. यानी ये बात जहन में रखने वाली है कि जितना डिस्काउंटिंग रेट ज़्यादा होगा उतनी ही प्रेजेंट वैल्यू हमारी कम होगी. So if we have got 144,000 amount of present value, then we need to increase the discounting rate from 10% to any percentage. Let's say, as we can see here, if we go up to 20% and we see that whether we get the present value equal to 100,000 or not, again we see that still we are not getting 100,000, but the answer is still more than that. So what we'll do, we'll further increase the डिस्काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, और इसी को हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं कि एक रेट इस्तेमाल किया, फिर उसको और बढ़ा दिया, फिर उसको और बढ़ा दिया या कम कर दिया, यहाँ तक कि हम उस जगह पे पहुँच गए कि हमारे पास एक रेट ऑफ रिटर्न के लिए वैल्यू हमारी आउटफ्लो से ज़्यादा है और दूसरी जगह पर हमारे पास वैल्यू हमारी आउटफ्लो से कम है. ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमें ये मालूम हो गया कि हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 20 और 25% के दरमियान कहीं लाई करता है. टू कैलकुलेट इट इन एब्सोल्यूट टर्म्स हमें आगे चलना है, हमें इसको फर्दर इंटरपोलेट करना है और ये देखना है कि इंटरपोलेशन के ज़रिए हम इसको कैसे प्रिसाइसली डिटरमिन कर सकते हैं. लेकिन यहाँ तक हम अपनी डिस्कशन को अगर समराइज़ करें तो हम ये कहते हैं कि आईआरआर की कैलकुलेशन के लिए हमें
रेट ऑफ रिटर्न्स को वन आफ्टर द अदर अप्लाई करना है, और अगर जिस रेट के लिए हमने पहली मर्तबा प्रेजेंट वैल्यूज़ निकाली हैं, हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो आउटफ्लो से ज़्यादा आ जाए तो हमें रेट को बढ़ा देना है। और अगर लेट सपोज हमारे पास ये वैल्यू 100,000 से कम आती 10% पर, तो हम इस रेट ऑफ डिस्काउंटिंग को कम कर देते। यानी वैल्यू अगर ज़्यादा आए आउटफ्लो से तो रेट को बढ़ा दीजिए, और अगर प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो से कम आए तो रेट को कम कर दीजिए, और उस वक्त तक मुख्तलिफ रेट्स अप्लाई करते चले जाइए यहाँ तक कि आपके पास दो ऐसे डिस्काउंटिंग रेट्स आ जाएं जिस पे एक पे आपकी कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो से ज़्यादा हो, और दूसरे पर आपकी कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो से कम हो जाए। तो आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट इन दो वैल्यूज़ के दरमियान में कहीं लाई करेगा, और वो 20 से 25% है। वो 21% भी हो सकता है, 22, 23, 24 या 23 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है। और इसको हम कैसे डिटरमिन करते हैं कि वो एग्जैक्ट रेट क्या है, उसके लिए हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं उसको इंटरपोलेशन कहा जाता है। इसकी डिस्कशन हम अगले मॉड्यूल में करेंगे।